So, all set. Now we are live. And today we are discussing this year's paper. I solved some political questions, just very DNCRTs, good some bit. Bumsi, कैसा था पेपर? Hello. Able to. Your voice. Hi, sir. So I felt. Hello. Go on. Yeah, I felt like most of the questions are from current affairs, especially science and tech, and in that also many are from biotechnology related. And polity was simple, like not so simple, but it's okay. Polity is okay. And current affairs only some unpredictable questions were there, sir. Like they asked about SAS, they asked about open source. I mean, like I don't know. I hope I marked them correct, but for many of us, unpredictable questions. SAS for the question they have asked. कहाँ से And Web 3.0. क्वेश्चन था? Sorry. क्या किस सेक्शन की बात कर रहे हो? Unpredictable questions. Science and technology, sir. Yeah, and economics say they have asked around 10 questions. And history also, I didn't feel like history also very tough for me. I felt tough in history also. Yeah, mostly current affairs only the most unpredictable for this year. Like I have attempted 70 questions, sir, out of 100. And I've not yet counted the marks. Maybe I'll count tomorrow. Yeah. Thank you. Anyone else who appeared in the exam today? प्रतीक ने दिया है और किसने दिया है? Most of those who have given the exam are already very exhausted. So okay, so some of my observations from today's paper. What are the changes that we saw in this year's paper? First change was previously. My voice is clear to all. So Sma is saying my voice is not clear. I think it should be clear to everyone. Yeah, it's clear, Susma, so please check from your side. So the first change in this year's paper was previously, if you will see previous year papers, questions used to come in a random order. So there will be one question of polity and then two questions of economics and one question of science. So this kind of there used to be a randomness, a mixed bag of questions. This year you will find that questions were in a straightforward, linear, arranged manner, कह सकते हैं. So like first 10 hour of economics, then all are of first 10 hour of economics, then polity, then history, then likewise. इस तरीके से एक अरेंजमेंट था 10 क्वेश्चंस का एक सेट में अरेंजमेंट था, which is highly unusual. So questions were asked in set of 10. Second thing, पिछले साल क्या हुआ था, there were some random questions on sports and all, and so this year it was assumed that this can remain a continuity and all. So this year those random questions on sports awards were not there. Sports awards का क्वेश्चन जो पिछले साल आया था and it started, so वो इस बार नहीं था. A continued trend जो कंटिन्यू रहा है थोड़ा वो देखते हैं. One thing that we have seen कि the weightage of ancient and medieval history is increasing. पिछले बार था तो it was considered an abruption, but this year also it is high and the weightage of modern history has gone considerably low.
4 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन है शायद मॉडर्न हिस्ट्री के, तो वेटेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री हैज गॉन very very low, and some very factual questions from medieval and ancient are being asked. देखेंगे, although some questions were answerable based upon our NCERT reading और कुछ standard sources से, कुछ questions like I say कि 50-50 रहेगा no matter how much you read. So ऐसा ही रहा, 50% questions could have been done by basic reading, 50% questions were not attemptable at all. तो ये एक ट्रेंड ध्यान में आ रहा है मेरे, मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज डिक्लाइन होना, एंशियंट एंड मिडाइवल का वेटेज कंटिन्यूअसली मेंटेन रहना पिछले साल के मुकाबले. फोर्थ थिंग, like always there were some random questions. Random questions, why I'm calling these random questions, because they were not in any recent current affairs sources, they were not in news as such. जैसे कि एक क्वेश्चन आया पोलर कोड का, अगर तुम लोगों ने देखा हो, तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड सोर्स मुझे नहीं दिख रहा है जहां पे कि इसका स्पेसिफिक करंट अफेयर्स में मेंशन हो. वैसे ही कुछ क्वेश्चंस है जो लग रहा है कि मन किया यूपीएससी का तो चलो मतलब पूछ देते हैं कुछ भी. एंड दिस रैंडमनेस इज कंटिन्यूड फॉर लास्ट एटलीस्ट 2 years 3 years. कुछ क्वेश्चंस हमेशा ही ऐसे आ रहे हैं विच आर वेरी रैंडम, मतलब इवन व्हेन यू आर गूगलिंग इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एनीथिंग ऑन देम. मिल भी रहा है तो बहुत पुराना पुराना कुछ मिल रहा है, 2012 का आर्टिकल, 2015 का आर्टिकल, 2017 का आर्टिकल, इफ यू ट्राइंग टू फाइंड दोस थिंग्स इन करंट अफेयर्स. तो कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं इस बार भी हमेशा की तरह, एंड द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर देम इज वी कांट डू एनीथिंग टू देम. इफ यू आर ट्राइंग टू like the one meme which is going very viral current is कि गुची गुची मशरूम का एक क्वेश्चन आया है. इट्स मशरूम एंड somebody had posted that on Instagram and now people are कि Instagram फॉलो करना है. इट डजंट मेक सेंस. तुम्हारा एक क्वेश्चन 2018 में एक क्वेश्चन आया था, 18, हाँ 18 या 17 में एक क्वेश्चन आया था. दैट क्वेश्चन वाज प्रिंटेड ऑन अ रैपर ऑफ अ 5 star चॉकलेट. चंदनपुर, चंदनगर ऑन हाई, चंदनगर हाई, दिस इज अ बीच इन ओडिशा. उस पे एक क्वेश्चन था, वो 5 star के रैपर पे पड़ा हुआ था. तो इट डजंट मीन कि यू विल गो एंड रीड ऑल द रैपर्स ऑफ 5 star चॉकलेट और ऑल द चॉकलेट्स. तो ये ठीक है, इट्स गुड टू लाफ अपॉन, बट इफ यू आर टेकिंग दिस एडवाइस सीरियसली तो प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ. तो एक ऐसे कुछ रैंडम क्वेश्चंस है. वन मोर post this is going viral is the end of elimination technique. कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अब एलिमिनेशन नहीं लगा सकते, यूपीएससी में वो एलिमिनेशन खत्म हो गया है. up to some extent I will agree it is true. At least there are 4-5 questions which could have been done, but हम देखेंगे उनको. यूपीएससी has framed the questions in such a manner that now you cannot use elimination, but still there are some questions where if you will apply the elimination technique you can get the answers very easily. टेक्निक अपनी जगह पे है ही, एंड एज आई ऑलवेज से, सीसेट के डिस्कशन में भी हमने बात किया था कि टेक्निक कुछ नहीं होता है. इफ यू डू नॉट नो द बेसिक्स यू कैन नॉट अप्लाई एनी टेक्निक. तो अगर कोई तुमको कहता, लाइक आई सॉ सम गुरुज ऑन, खास करके इंस्टाग्राम वाले ज्यादा मिलते हैं, कि 5 दिनों में आई विल टीच यू सम सुपर टेक्निक टू सॉल्व क्वेश्चंस, बिना क्वेश्चन पढ़े सॉल्व कर लो, बिना जाने सॉल्व कर लो. वो सब नहीं होता यूपीएससी में. इफ यू नो देन यू नो, इफ यू डू नॉट नो, इवन एलिमिनेशन वर्क्स व्हेन यू नो द क्वेश्चन. उसके बिना एलिमिनेशन नहीं काम करता. इट्स नॉट अ मैजिक वैंड है, कोई जादू की छड़ी नहीं है एलिमिनेशन की तुम घुमाओगे और काम कर जाएगा. बट वी विल सी दैट दैट्स अ वेरी
बहुत ही एक अलग तरीके का पैटर्न आया है कुछ क्वेश्चंस में, एंड वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस आज में। ये मेरे कुछ प्राइमरी ऑब्जर्वेशंस रहे हैं आज के पेपर में। और इफ यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू गिव यू अ कट ऑफ, सो कट ऑफ देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। आई डोंट नो हाउ पीपल रीच अप टू द कट ऑफ्स। मुझे ये साइंस कट ऑफ वाला साइंस समझ में नहीं आता। सो हाँ, कट ऑफ इज गोइंग टू बी लेस। इट विल बी समवेयर अराउंड द प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ, 90 के आसपास ही रहेगा। 2 मार्क्स ऊपर 2 मार्क्स नीचे कहीं रहे। सो बिकॉज ओवरऑल पेपर वॉज टफ। अब वी आर गोइंग टू डिस्कस द पेपर, एंड सिंस वी आर गोइंग टू डिस्कस द पेपर, तो इसका मतलब यह है कि मुझे खुद पेपर आना चाहिए। और दैट्स व्हाट सम टीचर्स want you to believe in कि उनको तो सब आता है। But when we were discussing this paper with some of our friends, and I was very frank about this कि there are less than 30 questions in this paper about which I can say confidently कि यही होता है, यही होगा। There is no other exception to this. उसके लिए मुझे पता है कि किस सोर्स से आ रहा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। There are less than 30 questions, and this happens rarely. Less than 30 मतलब it's pretty difficult. वो question, when you are trying to solve the paper, some more people have joined now, so एक बार फिर से पूछ लेते हैं। How many of you सोनल ने दिया होगा, और कितने लोगों ने आज पेपर दिया? प्रत्युष, कैसा रहा पेपर? कितने अटेम्प्ट हुए? Could not call you। 66। ठीक है। सो हाँ, भाग्यश्री कितना रहा? कितना अटेम्प्ट किया? कैसा रहा? What's your observation? 168। How was the paper? Lot of number wrong। हाँ, सो जैसा मैं कह रहा हूँ कि इस पेपर में ऐसा ही था कि अबाउट 30 क्वेश्चंस, एंड वी डिस्कस दिस। अब कैमरे पे आके लोग नहीं बोलेंगे कि 30 क्वेश्चन ही मुझसे सही हो रहा है, बट इन अ रूम ऑफ एक्सपर्ट्स एवरीबॉडी अग्रीड दैट इन दिस पेपर, कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ ये क्वेश्चन सही होगा, वो कहना 30 क्वेश्चन में भी मुश्किल था। ठीक है। आफ्टर दैट ये हो गया कॉन्फिडेंस वाला कि सही है। उसके बाद दो और कैटेगरीज आते हैं। वन कैटेगरी इज लॉजिक, कि हाँ मुझे लगता है, कुछ लॉजिक है तुम्हारे पास कि okay, this can be eliminated or this should not happen probably, and then you reach up to the answer. So you do some logical analysis and try to find the answer. You have some reason behind that। और तीसरा होता है कि मुझे लगता है ना, एक लॉजिक होता है और एक लगता है वाला होता है, कि लग रहा है कि होगा। यू डू नॉट हैव अ लॉजिक कि क्यों होना चाहिए, बट लगता है कि होगा। सो लॉजिक वाला तो फिर भी ठीक है, लगता है वाला अगर हो गया है तो अच्छी बात है, बट वी कांट इंक्लूड दिस इनटू आवर काउंटिंग। एनीवे, तो आंसर की किसी ने मिलाया अभी तक? सम इंस्टीट्यूट्स हैव ऑलरेडी गिवन देयर आंसर कीज एंड ऑल। सत्या है ज्वाइन। सत्या, कैसा रहा पेपर? कितने अटेम्प्ट हुए? अभी क्या हो रहा है, लाइक एक चीज तो अभी होगा कि मेनी पीपल विल नाउ राइट सम अपडेटेड बुक्स
हर साल होता है, नया क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है और नया। और बच्चों 80 कितने सही हो रहे हैं, आइडिया? चल ठीक है, तो एक बार पेपर देखते हैं। मुझे मुझे जो जो क्वेश्चंस ठीक लगते हैं and, जो मैंने थोड़ा रिसर्च किया। इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है, सम क्वेश्चंस क्वेश्चंस आर रिलेटिवली डिफिकल्ट इन द प्रीवियस ईयर, ऐसा मुझे लगता है। लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं था। इस बार क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट आए हैं, कुछ क्वेश्चंस अननोन है, और जो क्वेश्चंस हैं भी सीधे भी है, उनमें इतना सारा ऑप्शन दे दिया कि इफ यू आर नॉट एनालाइजिंग ऑल द एस्पेक्ट्स प्रॉपरली तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। बट आई थिंक कि मैंने जो इतना इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, वट एवर डिस्कशंस वी हैड, दैट हैव कम वेरी हैंडी ड्यूरिंग सॉल्विंग दिस। कितना यूज कर पाए हो नहीं कर पाए हो, इट्स अप टू यू, तुम ही लोग बताओगे कि काम आया या नहीं आया। बट सो फर्स्ट क्वेश्चन, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, बोल सकते हैं थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड है। श्रीलंका में, अफगानिस्तान में काफी इश्यूज चल रहे हैं स्टेबिलिटी वगैरह को लेके, एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट आईएमएफ गिव्स दिस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड ऑल। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था। इफ यू नो देन यू नो, इफ यू डोंट देन नीड और रीड पे, इफ यू रिमेम्बर, हमने जो टेस्ट सीरीज हम कर रहे थे, इन दैट वी हैड वेरी इलेबोरेट डिस्कशंस अराउंड नीड एंड रीड, है ना? 2 बार 3 बार हमने अलग से भी डिस्कशन किया इसके ऊपर। सो आई होप कि ये क्वेश्चन किया होगा तुम लोगों ने। वंशी, स्तुति, हुआ है ये? हाँ, सी, सी शुड बी द आंसर। सी इज द आंसर हियर। तो थिंक डिस्कशन का थोड़ा फायदा मिला होगा। और थर्ड क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी कंसिडर फॉलोइंग। अच्छा, एक बार क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़ा और सब्जेक्ट वाइज एक बार देख लेते हैं। सो इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन थे। पॉलिटी आई फाइंड वाज रिलेटिवली इजियर इफ यू कैन अप्लाई द नॉलेज जो तुमने पढ़ा है। थोड़ा सा कैच था, लेकिन इफ यू अंडरस्टैंड द पैटर्न तो सॉल्व करना आसान था पॉलिटी। एनवायरनमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, कुछ डिफिकल्ट थे बट स्टिल इट वाज डूएबल। करंट अफेयर्स, एज सच क्वेश्चंस तो करंट अफेयर्स के मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, बट मैपिंग्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, बिकॉज ऑफ द वे इन विच क्वेश्चंस वर फॉर्म्ड, इट मेक देम लिटिल बिट डिफिकल्ट। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इफ द इन्फ्लेशन, किसी को अगर डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, तो हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं कि क्यों क्या आंसर्स हो रहा है। ठीक है, अगर किसी ने किया है तो, अगर तुम्हारा आंसर कुछ अलग हो रहा है देन वी कैन डिस्कस दोस क्वेश्चंस एज वेल। If the inflation is too high, RBI is likely to buy government securities. तो एनसीईआरटी की क्लासेस के टाइम में भी हमने इस पे बहुत डिस्कशन किया है, ऐसे भी इकोनॉमिक्स की क्लास में भी हमने इस पे बहुत डिस्कशन किया है कि इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, टाइट मनी पॉलिसी, लूज मनी पॉलिसी, वन ऑफ द मेन डिस्कशन इसी के अराउंड रहता था। रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है तो आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट इन यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन विल फॉल तो आरबीआई क्या करेगा। आई थिंक क्वेश्चन आसान था, डुएबल था, अगर तुम लोगों ने ठीक से पढ़ा है तो। कुछ समझ में आ रहा है? ट्राई टू रीड द क्वेश्चन। जो लोग नहीं अपियर हुए थे पर इकोनॉमिक्स पढ़ा है तुम लोगों ने अगर, तो
क्या क्या है इसमें? हाँ, बी आंसर होना चाहिए। बाकी लोगों ने क्या किया है? देखो, इन्फ्लेशन अगर ज्यादा होगा तो आरबीआई को क्या करना होगा? इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई तो मनी सप्लाई कम करना होगा। मनी सप्लाई कम करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचनी पड़ेगी, ताकि लोगों के पास जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास आ जाए। सो दिस वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इफ दैट वन स्टेटमेंट यू कैन एलिमिनेट, देन बहुत आसानी से तुम बी पे पहुंच सकते थे। बस, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। जिन्होंने इकोनॉमिक्स का क्लास किया है, किसी तुमको हाई फाई बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इजीली हो सकता था। With reference to G20 Common Framework, consider the following statements. It is an initiative endorsed by G20 together. अच्छा, G20 Common Framework, अब ये देखो लास्ट ईयर भी G20 से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इफ एम कंट्रीज पूछ दिया था, तो इस बार तो कुछ ज्यादा ही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस। नाउ this is something that if you know then you know, if you don't know you don't know। किसी ने किया है इसको, पढ़ा था कहीं? तो हियर बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कोई लॉजिक नहीं है, फैक्ट पता है तो पता है, पढ़ना है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड किया है किसी ने? थर्ड स्टेटमेंट देखो इसका, इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन आईआईबीज आर नॉट टैक्सेबल। ऐसा कुछ नहीं होता है। बॉन्ड्स पे जो इनकम होगा उसमें तुमको टैक्स में कोई रिबेट नहीं मिलता है। रिबेट इसमें फायर। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है? नॉर्मली इफ यू बाई अ बॉन्ड, द इंटरेस्ट रेट इज फिक्स, 8% मिल रहा है तो 8% मिलता रहेगा। बट इफ इट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो इट विल इंक्रीज विथ इन्फ्लेशन। बट बाकी सारे जो रूल्स हैं, दोज रूल्स अप्लाई एज इट इज। So if you could have eliminated the third, you could have gone to your answer easily. ठीक है, क्या क्या है तुम लोगों ने, लॉजिक काम कर रहे हैं। इस पे हमने डिस्कशन किया है क्या इकोनॉमिक्स की क्लासेस में? इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग, जिन्होंने इकोनॉमिक्स का क्लास किया है। अच्छा, ठीक है। With reference to foreign owned e-commerce firms operating in India, इस पे हमने रिसेंटली, काफी रिसेंटली डिस्कशन किया था। द हिंदू में देयर वाज एन आर्टिकल, याद आ रहा है किसी को? अभी ये जो हमने, मैंने डिस्कस भी किया था कि कैसे ये, अगर तुम लोगों को याद होगा, हाउ दिस, कौन सी कंपनी है कॉस्मेटिक्स बेचती है, फिर मैं नाम भूल गया। नई नायिका। हाउ नायिका हैज राइज एंड इन ड्यूरिंग न्यूज़पेपर क्लासेस हमने डिस्कस किया था कि क्या रीजन है कि नायिका वाज एबल टू डोमिनेट दिस मार्केट इवन व्हेन दिस लार्जर प्लेयर्स लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजन आर देयर इन द मार्केट, है ना? सो that's the reason here foreign e-commerce companies है, they cannot
use the inventory model. They cannot keep the product with themselves. And then we have also discussed all those examples how they're trying to manipulate the market and all. कैसे they sell their own goods through different sellers. So डिग्री अभी क्लाउड टेल वगैरह का डिस्कशन हमने किया था द हिंदू के एडिटोरियल में, अगर तुम लोगों को याद होगा तो. So what should be the answer? Answer here is B. They can sell their own goods. No, foreign companies cannot sell their own goods. Indian companies can sell. They are just aggregators. यहाँ पे बहुत सारे sellers आके they can sell their product, but these companies cannot. So if you are a little bit aware about this, following the news and all, this was doable. Yes, Amazon. Who is the owner of Amazon, Bhagyasri? कौन मालिक है Amazon का? Others? Who is the owner of Jeff Bezos? Certainly he, लग तो नहीं रहा है कि बिहारी होगा वो नाम से. So अरे प्रत्युष कैसे गलती कर दी है. बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हमने किया है इस पे. तो चलो ठीक है. Which of the following activities constitute real sector? Now, this is a question which surprised me the most. Like I have taught economics for a very long time, but to be honest, I have to Google it. कि real sector क्या होता है? I have not come across this term during like all my studies. It's the first time that I come across something as called real sector. तो it's and I tried reading after like मुझे उतना time नहीं मिला, but I was trying to find it. The definitions which I'm coming across is also kind of vague. Some answer keys are probably giving हाँ ये दे रहे हैं शायद कुछ answers की में, but I'm not sure and certain about this कि क्या है ये. I have to read it a little more. No, पता नहीं. Probably if I would have been doing, I would have left this question. But तुमको पता नहीं तो कैसे हो, क्या क्या सोच के मार्क किए 1 and 2? वंशी एंड प्रत्युष क्या सोचे रियल सेक्टर क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स क्या क्या है इसमें? डी डी शुड बी द आंसर. डी शुड बी डी शुड बी द आंसर. चलो प्रत्युष का तो ठीक ठीक चल रहा है अभी. कहीं गड़बड़ भी कर रहा है. सो डी शुड बी द आंसर. सत्या ने सी किया है. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था. ट्रांसफर्स भी जनरली रीड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट वाला जाता है ध्यान जब भी सुनते हैं कुछ ऐसा तो. लेकिन यहाँ पे अगर तुम लोगों को याद होगा थोड़ा, वी हैव डिस्कस अबाउट दोस वोडाफोन वाला जो इशू था. हाउ दे वोडाफोन स्कैम का कैसे दे bought shares in some different country and
kept profiting from that. तो वो बेसिकली बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग से रिलेटेड एक इशू है जहाँ पे कंपनीज अपनी शेयर्स डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करती हैं किसी एंटिटी को. A foreign company transfers shares and such shares derive their substantial value from assets located in India. With reference to expenditure made by the organizations of a company, which of the following statements are correct? क्या है किसी ने? Capital expenditure. क्या होता है capital expenditure? एक के लिए श्योर है, दो का पता नहीं था. So capital expenditure is something which helps in asset building. Very good. एसेट बिल्ड हो रहा है तो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं वो एक तरीके से एसेट्स का ही काम करती हैं. सो वन शुड बी करेक्ट. सेकंड इज डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर while equity financing is considered as revenue expenditure. कोई बता सकता है डेट फाइनेंसिंग क्या है? Anybody has any idea? हाँ, क्या होना चाहिए आंसर? नहीं, सेकंड स्टेटमेंट गलत है. देखो डेट फाइनेंसिंग क्या है ना, व्हेन यू टेक डेट, अगर तुम अपने कंपनी को चलाने के लिए डेट ले रहे हो तो व्हेन यू विल टेक डेट यू विल पे इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू. तो तुम स्लोली 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 हर साल डेट का इंटरेस्ट पे करते रहोगे. सो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू. कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है क्योंकि तुम्हारा ओवरऑल डेट जो है इट्स देयर. इक्विटी फाइनेंसिंग ऑन द अदर हैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगर कोई कंपनी इक्विटी किसी की खरीद रही है तो इट इज बिकमिंग अ ओनर ऑफ दैट कंपनी. Or if it is taking money by selling its equity, then also it's selling its equity, it's selling its asset. तो वो हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, जहां एक्चुअली इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बजट पे, उसके लॉन्ग टर्म एसेट्स होल्डिंग्स पे. With reference to Indian economy, consider the following statements. A share of the household financing, I know, मुझे पता नहीं कितने देर तुम लोग रुकोगे, number has started to decline. Many of you might not have read economics yet and it might not be making any sense to you. Still you are here listening to it patiently, तो बढ़िया बात है. सुनो, थोड़ा कुछ ना कुछ तो सीखोगे. हाउ फ्रॉम, कैसे आ रहा है, क्या पढ़ना है, how you should approach the questions, at least you will learn those. So Indian economy, household finance, a share of household financial saving goes towards government borrowings, and the dated securities issued at the market related rates in option form a large component of internet. पढ़ो इसको एक बार, even those who have not appeared, and try to reach up to an answer if you can.
दिस इज पार्ट ऑफ मैक्रो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि दिस इज पार्ट ऑफ मैक्रो? तो इतना बता के तुम कौन सा चैप्टर में बताते तो कुछ समझ में आता। दिस इज पार्ट ऑफ मैक्रो बोलने से सब मैक्रो ही है। अभी तक जो कर रहे थे वो क्या माइक्रो था क्या? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लाइक यू विल नॉट, सॉरी, वी डू नॉट रीड इट कन्वेंशनली इन द बुक्स, बट थोड़ा सा इफ लॉजिक लगाया जाए तो प्रॉब्ली कुड हैव बीन सॉल्व्ड। पहले तो कि हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स, सेविंग्स क्या है? जो फर्स्ट चैप्टर है अपना एनसीईआरटी में, अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, देयर यू विल फाइंड अ डेफिनेशन ऑफ हाउस होल्ड इनकम, है ना? कंजम्पशन, अर्निंग में से जो बच गया उसमें वी फाइंड दिस सेविंग्स। तो जितना अर्न किया, जितना कंज्यूम किया, उसमें से बच गया वो सेविंग्स हो गया। Even in NCERT also we have read this topic called paradox of thrift। जब लोग बहुत पैसा बचाने लगते हैं तो इकोनॉमी और उल्टा नीचे गिरने में जाती है। तो तुम लोगों को याद आ रहा होगा तो। सो हाउस होल्ड सेविंग्स, पीपल सेविंग मनी, अगर लोग पैसा सेव करते हैं, some of that money will go towards government borrowings। Either they will put that into bank and then bank will buy the bonds, or they will buy some, they will buy some bonds themselves, or they will deposit that money into पीएफ अकाउंट्स। सबसे सिंपल एग्जांपल है, पीएफ में जमा करेंगे या नेशनल सेविंग स्कीम में जमा करेंगे। तो ये दोनों क्या होता है, जब तुम अगर इकोनॉमिक पॉलिटी, इकोनॉमी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, पॉलिटी में पढ़ा होगा, पब्लिक अकाउंट। तो यहाँ पे जो स्मॉल हाउस होल्ड सेविंग्स है हम उसको काउंट करते हैं, अगर याद आ रहा, इफ यू कैन रिकॉल दिस। सो सडनली a small part of saving goes towards government borrowing, right? Yes, I will try to speak as much as I can in English. So this first statement is correct if you can relate to it. याद आ रहा है? Can you relate to it अभी प्रत्युष, वंशी? The second is dated securities. Now, if anybody has done the NCERT classes, can you tell me what is a dated security? First one is correct. So first one is correct. Incorrect नहीं पूछना तो why this should be, P should be the answer. First one is correct. First statement is correct. Dated security क्या होता है, कोई बता सकता है? Hmm? We had a long discussion around this in NCERT class. What is a dated security? Yes, due at a specific date. उतने टाइम पे, उतने दिन पे, जैसा रेपो, हम जब रेपो का डिस्कशन कर रहे थे, इफ यू रिकॉल, सो रेपो के लिए जो सिक्योरिटीज दिया जाता है, दोज आर डेटेड सिक्योरिटीज। on a fixed date you have to buy or you have to see sell. That's why we also have read a related term which is discount rate, है ना? हमने डिस्कशन किया है इसके अराउंड में, why it is called discount rate, रेपो रेट को। So dated securities issued at market-related rates in auctions form a large component of internal rate. Internal rate is the money that government has taken from the internal market. How, Vamshi, bata? Can I ask anything? Hello. हाँ, Hello. Sir, like here I have one small doubt. Like what's the difference between the government securities and the dated securities? sorry. What's the main difference between the GSEC and dated securities? No, it's not different from that. Date.
if you want to differentiate between it, you differentiate between dated and undated security. Yeah. Okay. So Dated GSEC is security. not in GSEC. We don't have any fixed date, right? GSEC can have date, GSEC cannot have date. Suppose Okay. government can issue. GSEC is government issued securities. Government can issue both kind of security. It can issue dated security, it can issue undated security. दोनों कर सकते हैं. ठीक है sir. Thank you. So an internal debt is that government is borrowing from the internal market. तो ये statement भी ठीक है. Both are correct. Government actually borrow a lot of money in the form of dated securities. That's about 40% or something of the total borrowing. So C answer होना चाहिए. Both statements are correct. Polity. चलो देखते हैं कौन है पॉलिटी के महारथी लोग. बताओ. Try to read the question. क्या करके आए हो. देखो, some people were saying ना कि elimination has gone. तो देखो कितना आसानी से इसमें एलिमिनेशन लगता है. व्हेन आई फर्स्ट रेड दिस आई वाज लाइक अरे यार क्या ही पूछ रहा है इंसानियाल कमेटी. पहले सुना भी नहीं है कभी. ये तो फिर लगता है यूपीएससी हैज डिसाइडेड टू कि किसी को नहीं पास होता है. बट देन आई रेड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आई फाइंड इट कि फर्स्ट ये स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस. Even when we were reading in polity NCRTs, we come across this a lot of time, and I was emphasizing this. इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा पूछता है कि व्हाट इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन. सो लाइक कैबिनेट इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन. दो तरीके के वर्ड्स होते हैं. दोज हु विल बी रीडिंग polity later also, you must keep this in mind whenever you're solving questions. There are two classifications. One, it's something which is mentioned in constitution and is defined in constitution. Something which is mentioned in the constitution but is not defined in the constitution. And there will be some things which are neither mentioned or not defined. तो ये तीन टाइप के तुमको वर्ड्स मिलेंगे and you should have some examples for all of these. Mentioned and defined, mentioned but not defined, and neither mentioned not defined. तो ये सिविल कॉन्टेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली वेरी फ्यू थिंग्स आर डिफाइंड. तो एक तो तुम ये थोड़ा सा यू कैन अडॉप्ट दिस अप्रोच कि इफ इट्स आस्किंग कि व्हाट इज डिफाइंड व्हाट इज नॉट डिफाइंड, यू कैन ऑलवेज टेक दिस सेफर साइड कि नहीं डिफाइन होगा. कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करने लगे अगर एक एक वर्ड, सो ऐसे ही इतना मोटा है, इट विल बिकम महाभारत. Now, so if we eliminate 3, now we are left with A and B. 3 तो नहीं होने वाला है, so we are left with A and B. Now 1 and 2 are correct. जो भी हो 1, अभी मुझे भी नहीं पता कि एच सान्याल कमेटी ने बोला था कि नहीं बोला था. I really don't know. So, but whatever it is, 1 is going to be right. I do not have to do much about that. Second statement is also going to be right because मैं A करूँ या B करूँ, दो तो होना ही होना है. So 2 is also going to be right. Now everything hinges upon this, my knowledge of this fourth statement. If I know this, then I know this. If I don't know this, I don't know this. Now
पहला ही यहाँ पे देखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है. इफ वन इज राइट, पार्लियामेंट हैज पास्ड एन एक्ट अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो क्या तुमको नहीं लगता कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू पास द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कितना ट्रिकी क्वेश्चन है. फर्स्ट स्टेटमेंट itself इज सेइंग कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पास हुआ 1971 में. एंड दैट इज ट्रू बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन एज सच जिसको कि हम गलत कर सके. तुम 3 और 4 तो कर ले, तो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू दैट पार्लियामेंट हैज पास a contempt of court in 1971. So even if you do not know if the parliament can pass or not pass, that's is your logical answer. This should be the answer. जो लोग कह रहे हैं कि illumination is dead, it's not dead. You can be a little smart, है ना? तो जिस यहाँ तक पहुंचा था मैं, बट नहीं क्या अटेम्प्ट. ओह, ओह, 80 नंबर 1 पे जाते जाते थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा होगा ना. ठीक है. So this could have been done. Second is advocates, lawyers. ये ऐसे भी थोड़ा अगर तुम क्यूरियस होते हैं कि क्या होता है जनरली, सो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज, गीतांजलि क्या होगा आंसर? लॉट ऑफ लॉयर्स इन द क्लास. बी. पेटेंट लॉयर्स को एडवोकेट्स बोलते हैं क्या? रीड द क्वेश्चन केयरफुली. पेटेंट लॉयर्स आर कॉल्ड. लीगल फर्म्स को नहीं बोलते ना, तो कॉर्पोरेट. तो क्या लीगल फर्म्स को नहीं बोलते? Corporate lawyers are not advocates, but legal firms, legal firms को बोलते हैं. If my information is correct, legal firms are advocates. Corporate lawyer or patent attorneys are not advocates. They do not get, because they cannot appear into the court of law. वो जाके वहाँ केस ऐसा नॉर्मल नहीं लड़ सकते. बार काउंसिल डिसाइड्स द, ये सब तो हमेशा हल्ला में रहता है, न्यूज वगैरह में रहता है. बार काउंसिल हैज टू डिसाइड, जैसे यूजीसी डिसाइड करता है अपना इंजीनियरिंग वगैरह का करिकुलम, सो बार काउंसिल डज द सेम फॉर लॉ. सो हियर बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. 13 बताओ. आसान क्वेश्चन था. ट्राई टू रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व. 13 का बी. यस. सो स्टेटमेंट 1 could have been eliminated easily. प्रेसिडेंट का प्रायर कंसेंट नहीं चाहिए होता है. इनफैक्ट उल्टा होता है कि व्हेन इट इज पास देन प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज कंसेंट. अगर वो नहीं देता है तो देन उसका रूल नहीं है. ही हैज टू गिव हिज फॉर बाउंड टू गिव द कंसेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो फर्स्ट एलिमिनेट करो, यू विल रीच अप टू योर आंसर एज बी. ठीक. 14th देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगेन द सेम ट्रिक दैट इट प्लेड इन द फर्स्ट क्वेश्चन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इसमें
हमने डिस्कस भी किया है ड्यूरिंग एनसीईआरटी क्लासेस एज वेल, अदरवाइज आल्सो डिस्कशन हुआ होगा इसका कि कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट वर्ड ही नहीं है पार्लियामेंट में। तो पहले तो कैबिनेट वर्ड था ही नहीं, इट वाज लेटर एडेड। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं देखना है। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वैसे द डिविजन दैट वी सी इज ऑफ थ्री काइंड्स। मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, एंड मिनिस्टर्स विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस होते हैं। थ्री काइंड ऑफ मिनिस्टर्स दैट वी हैव डिस्कस, बहुत डिटेल्ड डिस्कशन किया है हमने ड्यूरिंग एनसीईआरटी क्लासेस। एनसीईआरटी पॉलिटी में अगर कोई ठीक से पढ़ा होता तो दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन सॉल्व। लेकिन अभी यहाँ बाहर से बैठ के बोलना थोड़ा आसान है कि दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन सॉल्व, बट एग्जाम में थोड़ा अगर माथा ठंडा रख के सोचा जाता तो किया जा सकता है। दिस कुड हैव बीन। सो council of minister is a very different thing, Sankit. So this first statement was wrong. Second is of course true. We had done all that calculation and on NCERT हमने पूरा percentage निकाल के, तुम लोगों ने खुद ही निकाला होगा if you have done the lectures and all, पूरा हम 82 85 कैसे कैलकुलेट करके हमने पूरा डिस्कशन किया था कि कितना होना चाहिए और कैसे मोदी जी वांटेड टू कीप मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस वगैरह। Anybody remember the discussion from the classes? So तो दिस कुड हैपन। लक्ष्मीकांत भी नहीं पढ़ना था इसके लिए तुमको। एक्सक्लूसिव लोकसभा का पावर, अगेन वी हैव डन दिस कंपैरिजन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। सो हियर क्या आंसर होना चाहिए? राज्यसभा। ये सेकंड स्टेटमेंट तो ऑफ कोर्स ट्रू होगा, इतना तो सबको पता होना चाहिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ओनली लोकसभा कैन पास, राज्यसभा कैन नॉट पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। लोकसभा में if there will be a minority government, then the government will fall. So with this you come up to this one and two. बाकी इमरजेंसी के लिए लोकसभा does not have exclusive power. Every time it has to consult with the Rajya Sabha and then only it can apply or any kind of emergency. So it's not an exclusive power. Only answer is B. Anti-defection law, ये बहुत ट्रिकी था। We were discussing and one of my friend fall into this statement। पढ़ने में अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलती कर सकते हो। पढ़ो इसको एक बार। Question was pretty easy but sometimes we fall into our biasness। हमको लगता है कि अच्छा ये तो पढ़ा हुआ ही है, so without reading carefully we try to attempt। पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बिल्कुल। About the second statement, we had discussions many a times in NCERT classes as well as current affairs में कि कैसे वेस्ट बंगाल में they are not removing। अभी बाबुल सुप्रियो ने भी छोड़ा था तो at that time also we had the discussion and I've told you that elaborate story during NCERT classes। तुम लोगों को याद होगा कि कैसे वेस्ट बंगाल में even after defection nobody was complaining and it was going without any challenge और ऐसे ही चल रहा था सब।
Second was of course correct. There is no deadline. First one is wrong. Can join a party within 6 months of being appointed. ये ट्रिकी था. उल्टा है यहाँ पे कि 6 महीने के अंदर ज्वाइन कर लो तो कर लो, 6 महीने के बाद नहीं करना है. ठीक है ना. इफ यू हैव टू ज्वाइन, ज्वाइन विद इन. So you cannot join it after 6 months. So this one was wrong. Answer should be B. Solicitor General of India जो है, it's not a constitutional post. He cannot attend meetings in the parliament. So this statement is wrong. Uh, According to Constitution, the Attorney General of India submits his resignation when government. So he gave again the same loop trap here. According to Constitution of India, this is not according to Constitution of India. It is a custom tradition that whenever government resigns, Attorney General resigns. Otherwise, he is not bound to resign. ऐसा कुछ नहीं है. So both statements are wrong. D should be the answer. 18 का 18. Anybody has done this? C is the right answer. I think in one of the batches I had discussed this in detail. Notes वगैरह में मैंने कुछ लिखाए थे. किसी बैच में मैंने पढ़ाया है क्या rates वगैरह? CPM headquarter and then what are the differences between which rates? So this could have been done, I think. PMP में किया था. With reference to आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. मुझे याद ही नहीं था कि डिजिटल मिशन क्या करता है. फ्रैंकली मैं सॉल्व करता, मैं आयुष्मान भारत है, डिजिटल मिशन में क्या करेंगे पता नहीं. And I still do not know the answer. I tried to look for it, but still I'm not getting any conclusive answer anywhere. कुछ लोग शायद तीनों स्टेटमेंट को सही मान रहे हैं. तो ठीक है. With reference to डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के बारे में. देखो, सो डिप्टी स्पीकर, स्पीकर फिक्सेस द डेट कि किस दिन करना है. आई थिंक दिस इज मेंशन्ड इन आवर एनसीईआरटी आल्सो. एंड हाँ, ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है. सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ये कस्टम है. Deputy Speaker. So second statement, if you eliminate, you are left with 1 and 3 and 3 and 4. So 3 is of course right, and 1 we have decided ki is right. So 1 and 3 should become answer. तुमको 3 and 4 पढ़ना भी नहीं पड़ेगा. समझ में आ रहा है एलिमिनेशन कैसे काम करता है? जो लोग कभी ट्राई नहीं किए हैं, हाउ यू कैन रीच अप टू द आंसर. एंड दिस इज नॉट सम जादू टोना. दिस इज प्योर रीजनिंग. We are eliminating second statement because we know that. उस पर मुझे पक्का विश्वास है. When you eliminate when you are 100% confident, you do not eliminate a half-hearted statement. तो इस second पे मुझे 100% भरोसा है कि this statement is wrong, and then I am eliminate, and because of that I am eliminating B and D. अगर मुझे थोड़ा doubt होता कि whether it is right or wrong, then I would not have eliminated this. But I am 100% certain that second is wrong.
Now I'm left with 1 and 3. So 3 is of course going to be correct, whatever it is. फोर्थ में क्या है, प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें. सो फोर्थ एनीवे इज रॉन्ग. वन एंड थर्ड शुड बी द आंसर. अदर लेकिन पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में जाओ और ऐसा मार्क करके आ जाओ. इवन इफ यू आर रीचिंग अप टू अ करेक्ट आंसर, यू रीड इट एंड रिकन्फर्म कि हाँ जो तुम कर रहे हो वो ठीक है कि नहीं. About 21, I tried to look for it. C is the answer given by most of the people. I have kind of a doubt between rice and sugarcane, but rice I think is has the upper hand. तो ठीक है, rice it is. स्तुति है क्या क्लास में? ठीक है. तो but rice ही कह रहे हैं लोग, तो जाहिर है तो rice. Three is a repeated question which is being asked for the second time. And all the statements are correct here. Basic है, science based कुछ क्वेश्चन आता है, most of the times all the statements are correct, so let's go with it. Previous year क्वेश्चन में अगर ठीक से पढ़ा होता तो you could have done it. This is something that I was not aware of. किसी ने इसको पढ़ा था क्या current affairs में? Anybody has read this? West Africa dry land time desert or turning into desert. पढ़ा था किसी ने? Anybody, you have find this anywhere? any कोई चीज इससे or any newspaper वगैरह वगैरह? ठीक है. So as I googled, I found that B is the answer. Again, very random kind of question. I'm teaching current affairs, I'm reading current affairs regularly, but I've not come across it. Maybe शायद जो प्रिपेयर कर रहे हो वो ज़्यादा अच्छे से कर लो, they could have find. But for me, this was a very uncertain question. क्यों पूछा जा रहा है पता नहीं. Uh, again, Gandikota Canyon in South India. The answer is Pennar. Again, I don't have much idea about this, why it came or where it was in news. So 25th का आंसर. अगर एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का क्लास तुम लोगों ने देखा होगा तो वी हैव डिस्कस दिस हॉरिजॉन्टल डिस्कशन डिविजन्स इन ग्रेट डिटेल कि कहाँ कौन सी नदी के पास कौन सा डिवीजन, कौन सी नदी के पास कौन सा डिवीजन आता है. सो गढ़वाल तो इधर हो गया तुम्हारा वेस्टर्न साइड में. नामचा बड़वा इज अराउंड तिब्बत. तो ये फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाता है. नोकरेक इज अ वेरी फेमस माउंटेन पीक. अगर तुम लोगों ने थोड़ा बहुत भी मैप वर्क किया होगा so probably you must have come across नोकरेक, and it's certainly not in सिक्किम हिमालयाज में तो नहीं है. so the only answer is this, only option which is correct here is 2, नंदा देवी कुमाऊं हिमालयाज में है. लेवांत अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे so sometime we have discussed about ISIL. याद है किसी को? इस्लामिक स्टेट्स ऑफ ईरान, इराक एंड लेवांत.
इराक एंड सीरिया है उस, या फिर उसको ISL भी बोलते हैं। तो इराक एंड सीरिया वाला जो रीजन है, दैट रीजन इज नोन एज लेबान, एंड दैट इज ईस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सोर्स। सो ए इज द आंसर। किसी को याद था कि नहीं है? याद आ रहा है अभी? कितने लोग बचे न्यूज़पेपर क्लास वाले? पढ़ना। ISIL का जिक्र किया है ना कभी क्लास में? यूजुअल बात ही। ठीक, अभी missed it. Consider the following countries. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, हमने काफी डिस्कशन किया है इसके अराउंड। आई हैव taught you the whole trick and all to remember this, है ना? ये कर सकते हो, ट्राई करो इसको तो। अजरबैजान और आर्मेनिया तो अलग जगह है, और तो both of them are fighting, so they do not have to do anything with the Central Asia. तो ये फर्स्ट एलिमिनेट हो जाता है, यू आर लेफ्ट विथ 3 एंड 3 4 5 बेसिक। ठीक है, यहाँ पे भी now this is a little confusing, but how I have solved is that कि मोजोनाइट जो है इंटायर इंडियन कोस्टल कोस्टल सैंड्स में तो नहीं हो सकता। मे बी इट इज देयर इन आंध्रा, इट इज देयर इन केरला, ये दो तो पता है कि वहाँ है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ वेस्ट बंगाल में भी कोस्ट है, वी हैव कोस्ट इन गुजरात एज वेल, एंड आई डोंट थिंक these regions have monazite. So based upon this, if I eliminate 3, I will reach to the B option. 1 and 2 तो पता होना चाहिए, थर्ड वाज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, तो वो एलिमिनेट करने के बाद बी आंसर मिल जाता है। ठीक है, नाउ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन और रात क्या होगा? सो वी हैड वेरी इलेबोरेट डिस्कशंस अराउंड दिस, बहुत सारा टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज करके मैंने ये समझाया है तुम लोगों को ज्योग्राफी के क्लासेस में। सो probably have done it correct। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में, जून में ये रहता है, 21 जून के अराउंड। Currently कुछ wetlands ऐड हुए थे, and I've asked you to plot this on the map। याद है? होमवर्क दिया था मैंने करने के लिए, याद करने के लिए बोला था। पूरा पढ़ना नहीं, बस किया था तो उसको याद है कि बोला था। रेस्ट ऑफ यू हैव नॉट डन सो। ठीक है, सी हैज डन इट एंड सी हैज सेंड इट प्रॉपर्ली। सो कभी कभी जो बोला जाए कर लेने से फायदा होता है, हमेशा नहीं तो कभी ना कभी तो हो ही जाता है। हाँ, देखो यहाँ पे दिस वाज द न्यू पैटर्न दैट यूपीएससी हैज सेट, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू। दिस itself has increased the difficulty of this question 100 times, दोगुना डिफिकल्ट हो गया। अदरवाइज इट वाज इजी। रुद्र सागर याद था कि त्रिपुरा में है, इसमें कोई डाउट नहीं था, एटलीस्ट एक तो बहुत श्योरिटी के साथ कोई कर सकता है। तो जनरली क्या होता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में कि इफ यू नो वन और यू नो टू, तो खुद आंसर निकल जाता है ऑप्शन से, और फिर उससे एलिमिनेट करके। मैच द फॉलोइंग बहुत आसान हुआ करते थे। वी यूज टू लाइक लुक फॉर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि ये वाला मिल जाए तो आसानी से कर लेंगे, बट नाउ दिस हैज बिकम डिफिकल्ट, एंड now UPSC is asking you to properly memorize the fact,
देखो जब भी डिफिकल्ट करना है यूपीएससी को एग्जाम, तो वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा जहाँ पे कि यू हैव टू रिमेम्बर अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, एंड दैट्स व्हाट दे हैव डन. यहाँ पे ट्रिक इज नॉट गोइंग टू वर्क. इफ यू डू नॉट रिमेम्बर द फैक्ट, यू कैन नॉट डू इट. अगर चारों याद नहीं है तो नहीं कर सकते हैं यहाँ पे. तो आंसर हियर इज बी. Two pairs are correct. Okira is in Jammu and Kashmir, and Sastham Kotta is in Kerala. इसको छोड़ के बीच वाले दोनों रेणुका और दूधसागर सही है. रेणुका इज द स्मॉलेस्ट. रेणुका, अगर तुम लोगों ने ईवीएस वाला नोट्स देखा होगा तो उधर भी हमने किया है. रेणुका इज द स्मॉलेस्ट वेटलैंड, एंड रुद्र सागर त्रिपुरा में है. So just something came from our notes. 31. I was conflicted कि क्या होना चाहिए आंसर. was kind of became tricky, but whatever answer I can find is people are going with the D कि all are open source digital platforms. मतलब सबका कोड फ्री है. anybody can use the code and build similar apps. इसको बोलते हैं open source digital platforms. समझ में आया ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है? जैसे योर यूपीआई इज अ ओपन सोर्स. कोई भी कंपनी आ सकती है यूपीआई यूज करके और वो अपना बना सकती है उसके ऊपर. इसलिए तुम देखते हो कि हजारों यूपीआई कंपनीज आज के टाइम पे आ गई है. सैकड़ों कम से कम आएंगे, इफ नॉट थाउजेंड. Similarly, these codes are open source, so you will find different apps. तो आरोग्य शोध से तो मैं कोविन में हमने देखा कि पेटीएम came up with its own booking system, and other companies came up with their own booking system. So 1 and 2 was okay. 3 and 4 ये थोड़ा old news हो गया था. All of them are open. Web 3 we have discussed during newspaper classes. All the statements are correct. More open, more free, more decentralized. और कुछ याद नहीं रखना है इसमें. Web 3 का मतलब है decentralized. Lack of control from organizations. Web 2 is like Facebook and Google. आज के टाइम में जो big companies are controlling the internet. Web 3 में nobody will own. These people will control their own data. All the three statements are correct. करके आए थे क्या अब हमसे? प्रत्युष. Sure. ठीक है. Software as a service. All the statements are correct. थोड़ा बहुत भी अगर इंटरनेट की जानकारी रखते हो तो इट्स वेरी कॉमन टर्म. फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम इज मिसाइल को स्टेबल ऑर्बिट में पुट करने के लिए थोड़ा थोड़ा उसको पुश किया जाता है until it is put into ऑर्बिट. जैसे हमने अगर कभी डिस्कस किया होगा हाउ मंगलयान वाज लॉन्च्ड, तो उसमें देखिए इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज की गई थी. एनीवे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था. इफ यू नॉट नो देन was little difficult. Qubit, वंशी ने मुझे यही मैसेज किया क्लास से आगे कि सर वन क्वेश्चन केम फ्रॉम आवर डिस्कशन क्यूबिट. आई डोंट नो खुश होता कि उदास होता. एक मैसेज है कि इतना डिस्कस किया उसमें से एक क्वेश्चन आया है कि क्यूबिट आया. So qubit we have discussed, and it's a quantum computing. We have a detailed discussion around how qubit works and how it leads to the efficiency of computers and all.
Consider following communication technologies. अगेन तुम लोग को याद होगा, मैं जब भी वट एवर आई टीच, जहां भी पढ़ाता हूँ, इफ आई टीच ज्योग्राफी, इफ आई टीच साइंस, एवरी टाइम आई पुट एक्स्ट्रा एम्फेसिस इन लर्न अबाउट रेडिएशंस। स्पेक्ट्रम के बारे में एक बार पढ़ लो कि कौन सा रेट और क्या है ना। अभी रिसेंटली भी साइंस एंड टेक की क्लासेस हम कर रहे थे, वहां भी मैंने पढ़ाया, जब ज्योग्राफी पढ़ाया था वहां भी मैंने पढ़ाया। इफ एनी ऑफ यू कैन रिकॉल, याद आ रहा है पूरा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम करते हैं कैसे, अल्ट्रावायलेट रेज क्या है, एक्सरेज क्या है, गामा क्या है, विजिबल क्या है, आईआर क्या है, माइक्रो क्या है, हाउ रेडियो कम्युनिकेशन वर्क्स। सो and every time I suggest you to at least cover this one part in science. Very, very important. This will help you everywhere. And again, the question came from the same short range devices. If you remember this electromagnetic wave, you could have done it easily. All these things are working on low energy or short wave radiations. Biofilms, I don't have any idea. एक जो वेग मेंशन मुझे मिलता है, सम ऑफिस वाज ओपन इन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अराउंड दिस बायोफिल्म्स करंट अफेयर्स में। अदरवाइज आई कुड नॉट फाइंड इट इन करंट अफेयर्स एंड ऑल एज वेल। तो अगर किसी ने कुछ रैंडम गेस करके ठीक किया है तो ठीक किया है, बट अदरवाइज द आंसर इज, किसने पढ़ा था क्या इसको कुछ बेसिक सोर्सेस में? एनीवेयर यू फाइंड दिस? ऑल आर करेक्ट। 36, 36 ऑल आर करेक्ट। 36 का डी है, 37 का भी डी है। Probiotics, I hope if somebody, some of you is a little bit health conscious, you would have done। और हमने NCERTs का भी डिस्कशन जो रिसेंटली किया, although many of you have not attended those sessions जो इस बार अटेम्प्ट कर रहे थे, बट बाकी लोगों को थोड़ा आइडिया होगा बैक्टीरिया एंड ईस्ट हाउ दे फंक्शन, दे क्रिएट प्रोबायोटिक्स। सो यस, सी इज द आंसर। सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है। ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड वेंजेस। ये नेचुरली बेहतर करते हैं प्रोबायोटिक्स इन आवर guts. Gut microbiome is a very important. So, COVID-19 vaccine. Now, this is something which was in news and कुछ बहुत मुश्किल सवाल नहीं था. If you would have thought about this. हाँ, Yakult Pure Healthy Zero. Here, C is the right answer. ये स्पुतनिक वाला जो ऑप्शन है वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म पे नहीं बेस्ड है। ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार था। सोलर फ्लेयर or solar storm. Recently, if you remember, there was an article in the Hindu about how some scientist has made this speaker-based model. हाँ प्रत्युष, हाँ unmute yourself. So that COVID-19 vaccine question. So what is the answers? C. एक मिनट। Sir, first is wrong. अच्छा एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, क्या बताया मैंने? एक मिनट, नहीं इसका तो तीनों सही होना चाहिए। एक मिनट Sir, Covishield is not mRNA based. Covishield mRNA are like only that
फाइजर एंड मॉडर्ना। तो हम फाइजर का ही ना ऑक्सफोर्ड वाले की टेक्नोलॉजी से ही बना रहे हैं ना, ऑक्सफोर्ड वाले वहां जो बना रहे हैं वो फाइजर बना रहे हैं। नहीं सर, एंड हम वी आर ऑक्सफोर्ड, वहां पे वो एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड है ना, ये हाँ कोविशील्ड। एंड हाँ दिस इज नॉट mRNA, जो मतलब मैंने पढ़ा था। C is the answer. I think B should be the answer because one is wrong, तो सिर्फ हाँ एक ही हाँ। बचता है। अच्छा देखना पड़ेगा फिर, आई थिंक मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ठीक है है। सर, मैं भी देख लेता हूँ एक बार, हाँ, बट मैंने मतलब B मार्क किया, ठीक है। ठीक। सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर, तो अभी रिसेंटली अगर याद होगा वो द हिंदू में देयर वाज एन आर्टिकल कि वो कैसे स्पीकर से दे वर टेस्टिंग अबाउट द सोलर फ्लेयर्स एंड हाउ द मॉडल वर्क। किसी को याद आ रहा है वो आर्टिकल? आईआईएससी बेंगलोर में एक रिसेंट स्टडी किया उन्होंने ड्यूरिंग लॉकडाउन। नहीं याद आ रहा है? सोलर फ्लेयर्स जीपीएस नेविगेशन सिस्टम को तो इफेक्ट करेगा, पावर ग्रिड डैमेज हो सकता है, और ओरा तो बनता है। फॉरेस्ट फायर का चांसेस बिकॉज समटाइम टेम्परेचर चेंजेस भी होते हैं इसके चलते, बट लेट दैट बी फॉर नाउ। ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट कैन गेट डिस्टर्ब, रेडियो वेव कम्युनिकेशन हो सकता है। तो 7, 1, 3, 4 और 7, इसको लेके तो मैं कंफर्म हूँ। 1, 3, 4, 7, तो इसमें ये सब मिल रहा है। 1, 3, 4, 7, एनीथिंग दैट वी कैन एलिमिनेट। अब इन क्वेश्चंस में एलिमिनेट करना इज अ लिटिल ट्रिकी, क्या एलिमिनेट किया जाए। सो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, सुनामी could occur at equatorial regions. I have never read कि there is a direct correlation and this force is not so strong that it can lead to earthquakes and tsunami. So if we can eliminate the second one, then also we get to the answer very easily, which is C. अरे 7 ऑप्शन था तो नहीं किया ऐसा। Sometimes big questions are very easy. Climate action tracker, ये this may seem a little bit difficult question, but environment में भी expect such kind of questions. Environment में ऐसा क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं, और करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं मेंशन जरूर रहा होगा। ए इज द आंसर। ये क्वेश्चन मुझे देख के ही थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था। डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट। द क्लाइमेट ग्रुप पता है, 90 100 पता है, तो sort of leaving it aside। अगर किसी ने किया है तो आई थिंक क्या आंसर बता रहे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था। ड्यूरिंग आवर एनवायरनमेंट क्लासेस वी हैव डन दिस, ट्राई टू सॉल्व। जिन्होंने एनवायरनमेंट का लेक्चर किया है, कर पा रहे हो क्या? यस वंशी। 41 नहीं, मैं 43 पूछ रहा हूँ।
किडनी वर्ड पे अगर ध्यान दोगे तो कर पाओगे. किडनी फिल्टर्स दिस. किडनी क्या फिल्टर करता है अपने बॉडी में? यूरिन फिल्टरेशन वगैरह का काम करता है. आंसर शुड बी डी. Aquatic plants absorb heavy metals and excess nutrients. Okay. एयर क्वालिटी अगेन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, बट हमारा अगर बेसिक भी, अगर तुम लोगों को एनवायरनमेंट वाला डिस्कशन याद होगा तो PM10 नहीं, PM2.5 can enter and go into the bloodstream. I have distinctly told this line and I think some of you will be able to recall. notes में भी पहले ही ऊपर वाले लाइन में, फर्स्ट लाइन में तुमको ये मिलेगा. याद आ रहा है किसी को? So this is now. So you eliminate the third, you are left with 1 and 4 and 1 and 2. So 1 is of course right. तो ये जो सबसे मुश्किल था, देखो ये डेटा रिमेम्बर करना बहुत मुश्किल काम है. बट नाउ इफ यू start with this, you're not supposed to remember the data now. Even if you do not know the data, you can mark it correct. तुमको इसका सही या गलत करने की जरूरत ही नहीं है. Now you have to pick one of the two between these two, and I think we should go with the 4, that excess ozone can cause asthma. गुच्ची वाला ये क्वेश्चन चल रहा है मार्केट में. अगेन सम रैंडम क्वेश्चन. आई डोंट, ये थोड़ा सा दिस वाज some controversy, some news around this for GI tag. Sorry, IG लिख रहा हूँ. GI टैग मिलने के लिए गुच्ची के लिए बात हो रही थी, तो that's why this was in news. क्या आंसर बता रहे हैं लोग? आई थिंक आंसर इज C, 1 and 2. और anybody has a different answer? नहीं. ठीक है. हाँ, तो फिलहाल तो यही जानकारी है अपने पास. दिस हैपेंस इन हिमालयास नियर कश्मीर. नॉर्थ ईस्ट में नहीं होता है, कश्मीर के अराउंड होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज. इन दिस वाज अ लिटिल बिट ट्रिकी. यहाँ तक अभी मुझे मिला है, आई वाज नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस. कुछ एलिमिनेट हो रहा था, बट स्टिल देयर वाज अ कंफ्यूजन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड. क्योंकि यहाँ पे जो इजीली एलिमिनेट हो जाता है दिस इज स्टेटमेंट नंबर 4, बिकॉज यू बर्न एनीथिंग it will emit some carbon dioxide, which is a greenhouse gas. So incineration, if you have done the environment class, incineration cannot be greenhouse gas free. So B and C तो eliminate हो जाता है. A and D are left. So with this we can say कि 3 is correct. Now you have to choose between 1 and 2. Okay, which one is correct? And as I rate, most of the people are going with second. So answer should be D, 2 and 3. गोल्डन मसीह तो बहुत फेमस है. इट्स अ फिश, नॉट अ बर्ड. यहाँ पे क्या ट्रिक था? चिकपी इज a pea. It's like gram, and we know that lentils are nitrogen fixating. तो ये मुझे एक पता था. And spinach should not be nitrogen fixating plant. उसको उल्टा इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है.
और क्या बोले, it takes more nitrogen to build itself. It fix नहीं करता है. It's drain more nitrogen from the soil. As my understanding was, जो मैं logic लगा रहा था. So with that I eliminated 6 and I kept third. पहले तो ये था कि third वाला होना चाहिए. So I zeroed on A and B. And then I thought कि eliminate 6. दो चूज करना था, 5 और 6 और 4. So I went with A is the right answer anyway. बाकी थोड़ा मुश्किल हो सकता था करने में एग्जाम के टाइम में. बायोरॉक टेक्नोलॉजी वी हैव डिस्कस इन एनवायरनमेंट क्लास में. बताया था तुम लोगों को, याद हो कि वी थ्रो सम आयरन शेप्ड फुटबॉल्स इन द क्वेश्चंस. याद आ रहा है किसी को? तो हमने डिस्कस किया था क्या? फुटबॉल टाइप का फेंकते हैं, कुछ फोटोज भी है हमारे नोट्स में. पढ़ना वैसे ही किसी ने किया ही नहीं होगा क्लास. तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी is for restoration of damaged coral reefs. I've taught this in class as well. We throw some football-shaped iron cases around which we try to grow uh, these corals. चलो आज बस यही एंड करते हैं. 50 कल इस टाइम पे करते हैं. मिवाकी मेथड इज फेमस. इट वाज इन न्यूज़ एज वेल. और मुझे लगता है कि शायद प्रीवियस ईयर में भी कहीं कुछ इसका डिस्कशन रहा है. तो इट इज क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया सीरीज. तो ठीक है, आगे करते हैं. हाँ, प्रत्युष वंशी. Sir, 36, I have small doubts. Sir. Sorry, 36, question number 36, sir. 36. 36 In that, how CCTV can be a wireless communication technology? क्या बोले? वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थोड़ी बोल रहा है. शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी बोल. Yeah. सीसीटीवी क्या हो रहा है उसमें? तुम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो क्या? यू आर डू समथिंग, somebody nearby can watch that. जब करोगे you can Okay. communication is not always about talking. Yeah, yes, sir. You can I marked communicate. RFID and the other one. Okay, sir. ठीक. चलो ठीक है. आई होप थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लगा होगा. इफ यू हैव रेड समथिंग इन द हाइंडसाइट, इट डू नॉट लुक दैट डिफिकल्ट. बाहर से आके सॉल्व करना इज easier thing. In exam the mindset is very different. You do not expect such questions, and once you come across a few unknown questions, the whole adrenaline starts to work in a very different way. Or that's the lesson that we have to learn. एग्जाम में तैयार रहना है अनएंटिसिपेटेड क्वेश्चंस के लिए. एंड यू हैव टू, आई वाज ट्राइंग टू से दिस टू एवरीवन, बट मैं कन्वे नहीं कर पाया ये मैसेज. बट कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, नहीं टोल दिस. देखो क्या होता है, व्हेन वी get into such situations our adrenal secretion rises and फिर हम डरने लगते हैं. मेरे साथ क्या होता है, आई एम I will not say कि very good, but I'm a decent public speaker. I love to perform on stages, giving speeches, hosting events, and all that. That's something that I love to do, and I've done it so often that those who look from the outside, they may think it's very easy for me, and I do not get afraid or मुझे डर नहीं लगता इस तरीके का.
but I can say this, every time I go on the stage, sir, that adrenaline rush comes always. It's always comes, and it always feel like the legs are shaking, or पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. Although I have done it, like I'm doing this from, I don't know, class 4 or 5 or something, and since then, but still. But one thing I have learned when I studied, I think during biology classes also we were discussing about this. One thing that I have learned, ki adrenal circulation is not bad for you. It's actually the way the nature has designed us to prepare us better for an unseen evil. लड़ने के लिए तैयार करता है एड्रेनलिन, या भागने के लिए तैयार करता है. दोनों में से कुछ एक काम वो तुम्हारे साथ करेगा, या वो अगर तुम सोच रहे हो तो it is supplying more energy to your brain if you are in such situation. तो कई बार क्या होता है कि when you do not you have never experienced that adrenaline rush in your body, and you go to the exam for the first time and you feel that adrenaline rush for the first time, तुमको लगता है कि तुम्हारे साथ क्या ही हो रहा है, अब ये तो बहुत कुछ अजीब सा चल रहा है. And instead of focusing on the paper, you focus on that something very unique experience that you feel in the body. लेकिन आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स दैट आई हैव नाउ बिकम वेरी वेल अक्वेंटेड कि ये होता क्या है एंड व्हाई इट हैपेंस. एंड इसलिए थोड़ा सा खुद को उस सिचुएशंस में डालना भी चाहिए where you are you feel that adrenaline rush, and then you learn to get the best out of it instead of keep पैनिक कर रहे फिर मेरे साथ क्या हो रहा है. तो एग्जाम में होता है, और कई बार मुझे लगता है कि बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग योरसेल्फ एंड टेलिंग योरसेल्फ नो ऑल इज गुड एंड सब अच्छा होगा. होता है ऐसा तुम लोगों का? चलो ठीक है, लेट्स एंड दिस and we'll discuss the rest of it. I hope those who have given the exam, Vamshi, Pratyus, वगैरह, just check the answer sheet. Do not leave it for uncertainties. Answer keys from different institutes will be slightly right and wrong. मान लो 5 क्वेश्चन का भी अंतर आता है. If you are able to get into that 80 plus वाला marks for general category, you start preparing for the mains. If you are not getting in that 80 plus from any of the answer keys, then consider it you are not qualifying, and then accordingly we can plan कि आगे क्या करना है. There is no need to leave the things फॉर द अनसर्टेनिटी से क्या होगा, रिजल्ट आएगा तो 20 दिन के बाद देखेंगे. मुझे पर्सनली वो एप्टीट्यूड पसंद नहीं है. जो होना है नाउ इट हैज हैपेंड, सो लेट्स फेस द रिजल्ट एंड मूव अहेड इन द लाइफ. ठीक है.